Question 551. An element playing important role in nitrogen fixation is molybdenum, copper, manganese, zinc. Correct answer is option A. Molybdenum is important cofactor of enzyme nitrate reductase जो कि help करते हैं nitrogen fixation में. Question 552. Which aquatic form perform nitrogen fixation? Azula, Nostoc, Salvia, Salvinia. Correct answer is option A. Azula is aquatic form जो कि nitrogen fixation perform करता है. Question 553. The common mode of sexual reproduction in Chlamydomonas is isogamous, anisogamous, oogamous, hologamous. Correct answer is option A. कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमेडोमोनास इज आइसोगैमी और इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज में, स्ट्रक्चर और शेप में. क्वेश्चन 554. ब्राउन एल्गी इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, हिमाटोक्रोम, फाइकोसानिन, फाइकोरिथ्रिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फ्यूकोजेंथिन इज अ पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी और इसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी का करेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर है वो इस फ्यूकोजेंथिन की वजह से है. क्वेश्चन 555. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस? ट्रिटोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा, ब्रायोफाइटा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. किंगडम ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है बिकॉज दे लिव ऑन लैंड एंड डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन 556. Cells formed in bone marrow include red blood cells and leukocytes only, lymphocytes only. Correct answer is option B. Red blood cells as well as leukocytes, they are formed in bone marrow. Question 557. The neurogenic heart is the characteristic feature of humans, arthropods, rabbits, rats. Correct answer is option B. Neurogenic heart is present in lower invertebrates such as arthropods. Question 558. Wall of blood capillary is formed of hemocytes, parietal cell, endothelial cell, actinic cells. Correct answer is option C. Endothelial cells or squamous epithelium forms the wall of blood capillaries. Question 559. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by lack of mutation, lack of random mating, lack of migration. Correct answer is option B. According to Hardy-Weinberg principle, the tendency of population is disturbed by lack of random mating. Question 560. Darwin finches are good example of industrial melanism, connecting link, adaptive radiation, convergent evolution. Correct answer है इसका option C. Darwin finches are good example of adaptive radiation. Question 561. First organisms were chemoautotrophs, chemoheterotrophs, autotrophs, eukaryotes. Correct answer is option B. First organisms were prokaryotic like bacteria and they were chemoheterotrophs in their feeding mode. Question 562. Chitinous exoskeleton of arthropod is formed by polymerization of N-acetylglucosamine, lipoglycan, keratin sulfate and chondroitin sulfate, D-glucosamine. Correct answer is option A. Chitinous exoskeleton of arthropod is formed by polymerization of N-acetylglucosamine. Question 563. Which of the following is a reducing sugar? Galactose, gluconic acid, beta methyl galactoside or sucrose. Correct answer है option A. Monosaccharides such as glucose, galactose, they are reducing sugar in nature. Question 564. Which hormones stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate ion? Angiotensin, epinephrine, gastrin and insulin.
कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हार्मोन stimulates the production of pancreatic juice as well as bicarbonate ions. Question 565. Carrier ions like sodium ion facilitate the absorption of substances like amino acid and glucose, glucose and fatty acid and glycerol, fructose and some amino acids. Correct answer is option A. Sodium ions facilitate the absorption of glucose as well as amino acids. Question 566. Hydrolytic enzymes which act on low pH are called as proteases, alpha amylases, hydrolases, peroxidases. Correct answer is option A. Proteases are the enzymes, hydrolytic enzymes which acts on low pH. An example is pepsin, which is a protease enzyme present in the stomach and its pH is 2. Question 567. Which of the following is correctly matched? Option A. Vitamin E is known as tocopherol. Vitamin D is known as riboflavin. Vitamin B is known as calciferol और Vitamin A is known as thiamine. तो इसमें जो करेक्ट मैच है वो है ऑप्शन ए. विटामिन ई इज़ अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज टोकोफिरोल, जबकि विटामिन डी को नाम देते हैं कैल्सीफिरोल का, और विटामिन बी जो है B2 जो है वो राइबोफ्लेविन है और थियामिन B1 है. Question 568. Meiosis is best observed in dividing cells of apical meristem, cells of lateral meristem, microspores and anther wall, microsporocytes. Correct answer is option D. माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और इनके अंदर मियोसिस होती है तो उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स. तो मियोसिस बेस्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स के अंदर. क्वेश्चन 569. Albuminous seeds store their reserve food mainly in endosperm, cotyledons, apococyle, perisperm. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एल्बुमिनस सीड्स के अंदर जो रिजर्व फूड है वो उनके एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर होती है. क्वेश्चन 570. अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंटेमोफाइली, हाइड्रोफाइली, क्लेस्टोगैमी, एनीमोफाइली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Attractants and reward are required for pollination through insects, that is known as entomophily. and entomophily के अंदर जो attractants हैं फॉर एग्जांपल फ्राग्रेंस एंड फ्लावर कलर, और इसी तरह से रिवार्ड जो है वो नेक्टर्स और पोलन, ये सारी चीज़ें entomophily में हेल्प करती हैं. Question 571. If apical bud has been removed, then when we observe more lateral branches, more axillary buds, plant growth stops, flowering stops. Correct answer is option A. एपिकल बड से ऑक्सीजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि लेटरल ब्रांचेस को इनहिबिट करता है. तो इफ़ एपिकल बड इज़ रिमूव्ड देन ऑब्वियसली देयर विल बी मोर लेटरल ब्रांचेस. Question 572. Apical dominance is caused by abscisic acid in lateral buds, cytokinin in leaf tip, gibberellin in lateral buds, auxin in shoot tip. Correct answer is option D. Auxin in shoot tip is mainly responsible for apical dominance. Question 573. Which of the following character is absent in all chordates? Diaphragm, coelom, pharyngeal gill clefts, dorsal nerve cord. Correct answer is option A. Diaphragm is not present in all chordates, rather it is present only in mammals. So it is absent in all chordates and present only in Mammalia class. Question 574. The lower jaw in mammal is made up of dentary, maxills, angular, mandible. Correct answer is option D. The lower jaw of mammals is made up of mandible bones, and which is the strongest and longest bone. Question 575. Solenocytes are the main excretory structures in echinodermates, platyhelminthes, annelids, mollusks. Correct answer is option B. Solenocytes or flame cells are the main excretory organs of platyhelminthes. Question 576.
Which one of the following is not a living fossil? Peripatus, king crab, Sphenodon, Archaeopteryx. Correct answer is option D. गिवन ऑप्शन में आर्कियोप्टेरिक्स एक लिविंग फॉसिल नहीं है बल्कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है रिप्टाइल और बर्ड्स के बिटवीन. Question 577. RNA interference involve synthesis of cDNA and RNA using reverse transcriptase, silencing of specific messenger RNA due to complementary RNA, interference of RNA in synthesis of DNA और synthesis of messenger RNA from the DNA. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. RNA इंटरफेरेंस में जो है वो स्पेसिफिक मैसेंजर RNA की साइलेंसिंग करवाई जाती है ड्यू टू कम्प्लीमेंट RNA. Question 578. The term humulin is used for hydrolytic enzyme, powerful antibiotic, human insulin or isoenzyme. Correct answer है option C. Human recombinant insulin is also termed as humulin. Question 579. The principle of competitive exclusion was stated by C. Darwin, G.F. Gauss, MacArthur or Walhurst and Pearl. Correct answer is option B. Principle of competitive exclusion principle was stated by J.F. Gauss. Question 580. Which one of the following is not a parasitic adaptation? Development of adhesive organs, loss of digestive organs, loss of reproductive capacity, loss of unnecessary sense organs. Correct answer है option C. Reproductive capacity is most important feature of parasitic adaptation. सो अगर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस हो जाएगी तो इससे पैरासाइटिक एडेप्टेशन इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं होगी. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन 581. सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट. तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जितनी भी पॉपुलेशन उनके सम को हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. Question 582. Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Energy flow, decomposition, productivity, stratification. Correct answer is option D. Stratification is the vertical distribution of different species in different layers and this is not a functional unit of ecosystem. Question 583. Most effective way to conserve the plant diversity of an area by tissue culture method, by creating biosphere reserve, by creating botanical garden, by developing seed bank. Correct answer is option B. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. तो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कि उनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किया जाए. क्वेश्चन 584. The breeding place of flamingo Hansavar in India is most likely Run of Kutch, Ghana Vihar or Sambar Lake, Chilka Lake. Correct answer is option A. Run of Kutch is a breeding place of flamingo. It is also known as a cities of flamingo. Question 585. ड्यूरिंग म्योसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट. तो म्योसिस के दौरान जाइगोटीन स्टेज पे क्रोमोसोम्स जो है वो लेंथ वाइज पेयर अप होते हैं और इस प्रोसेस को नाम देते हैं साइनेप्सिस का. क्वेश्चन 586. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? पोरोमीटर और हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, एक्सानोमीटर, टेंशियोमीटर और वेरोमीटर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. पोटोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं प्लांट्स में. क्वेश्चन 587. इन द सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज नॉन एज ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सॉइल के अंदर जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम के थ्रू प्लांट्स में भेजती हैं उसको नाम देते हैं कैपिलरी वाटर का. Question 588. A fruit that is developed from the Hypanthodium inflorescence is called Sorosis, Syconus, Caryopsis, Hesperidium. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. वो फ्रूट जो कि हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो उसको नाम देते हैं साइकोनस का. क्वेश्चन 589.
The morphological nature of edible part of coconut is cartilagen, endosperm, pericarp, perisperm. Correct answer है option B. The edible part of coconut is known as endosperm. Question 590. Placentation in tomato and lemon is parietal, free, central, marginal, axile. Correct answer is option D. Axile placentation is present in tomato as well as lemon. Question 591. A wood-boring mollusk or shipworm is chiton, teredo, or limix, or patella. Correct answer is option B. Teredo is a wood-boring mollusk or shipworm. Question 592. Silk thread is obtained from the silk moth during pupal stage, larval stage, nymph stage, adult stage. Correct answer is option A. Silk thread is obtained from the silk moth during pupal or cocoon stage. Question 593. The correct the correct order of steps in polymerase chain reaction is denaturation, annealing, and extension. Denaturation, extension, and annealing. Annealing, extension, and denaturation. Extension, denaturation, and annealing. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए. पीसीआर के अंदर सबसे पहले डिनेचुरेशन होती है, उसके बाद स्टेप 2 में एनीलिंग और स्टेप 3 में एक्सटेंशन. Question 593. According to Hugo de Vries, the mechanism of evolution is minor mutation, saltation, phenotypic variation, multiple step mutation. Correct answer is option B. According to de Vries, evolution is a saltation. Saltation is a single large step mutation that is results in the evolution of new species. Question 594. Which one is wrongly matched? Gamma cups are present in Mercantia. Uniflagellates gametes present in Polysiphonia. Biflagellate zoospores are present in brown algae. Or unicellular organism is present. Given example is chlorella. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. पोलीसाइफोनिया जो कि एक रेड एल्जी है, इसके अंदर यूनिफ्लेजलेट गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज पोलीसाइफोनिया हैव नो मोटाइल स्टेजेस. Question 595. Hormones secreted by placenta to maintain pregnancy are HCG, HPL, progesterone, and prolactin. HCG, HPL, progesterone, and estrogen. HCG, progesterone, estrogen, and glucocorticoid. HCG, HPL, estrogen, relaxin, and oxytocin. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. वो हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें एक HCG है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. Question 596. Which of the following is not a prokaryote? Oscillatoria, Saccharomyces, Nostoc, Mycobacterium. Correct answer is option B. Saccharomyces cerevisiae is a yeast and belongs to kingdom fungi. It is not a prokaryote. Question 597. Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? Cleavage of signal peptide, phospholipid synthesis, protein glycosylation, protein folding. Correct answer है ऑप्शन बी. फास्फोलिपिड सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. Question 598. Which of the following term describe human dentition? Thecodont, diphodont, and homodont. Pleurodont, diphodont, and heterodont. Thecodont, diphodont, heterodont. Pleurodont, monophyodont और humodont. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ह्यूमन डेंटिशन जो है वो थीकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट टाइप है. Question 599. Which is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte? Type plasmid, lambdaphage, PBR322, retrovirus. Correct answer है ऑप्शन डी. Higher organisms like human
तो इनके जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वेक्टर यूज़ होते हैं वो है रेट्रोवायरस। क्वेश्चन 600, which of the following is an occupational respiratory disorder? Botulism, anthracis, silicosis, emphysema. Correct answer है ऑप्शन सी। Silicosis is a human lung disease that is caused by uh, taking in little bits of silica. So it is an occupational respiratory disorder.